Hello everyone, myself Kashif Nankani. In this video, we are going to look for the solution of internal exam 2 of data science, which is mainly based upon MCQ or fill in the blanks. It consists of four sections. First was data cleaning, second is machine learning, and third is deep learning, and last one is Python data structure. So let's begin. Uh, So the first section is data cleaning और उसका पहला क्वेश्चन है when merging data sets with different measurement system ensuring dash between unit is crucial. तो जब हम data sets को merge कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा important क्या होता है उसमें होता है consistency. In data clearing dash stresses that analysis quality depends on input data. जब डेटा क्लीनिंग होती है तो जो एनालिसिस क्वालिटी है डिपेंड किस पे होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट स्ट्रेसेस पे. ठीक है. डैश और सिमेट्रिक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डेटा क्वालिटी प्रोसेसेस दैट कैन बी करेक्टेड. एरर्स स्लैश नॉइसेस ऐसे सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस होते हैं डेटा क्वालिटी में, जो कि प्रोसेस डेटा क्वालिटी प्रोसेस में जिसको करेक्ट करना चाहिए, करेक्ट करते हैं हम. ठीक है. इन रिकवरेबल इंफॉर्मेशन लॉस ड्यूरिंग एन एक्विजिशन इज एन लॉस irretrievable. कभी कोई इरिकवरेबल इंफॉर्मेशन वो होती है कि लॉस वो होता है कि पावर कट हो गया, तो उस टाइम पे जो लॉस होता है वो अब वापस आना पॉसिबल नहीं होता है. रिप्लेसिंग मिसिंग डेटा विद द मीन ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यू इज कॉल्ड मीन इम्प्यूटेशन, जो अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, मीन मॉड इम्प्यूटेशन. नेक्स्ट सेक्शन ए का ही पार्ट 2 है. अब filling missing values via linear regression or curve fitting is known as regression imputation. Uh, always preserve both data and the clean data set. जो रॉ डेटा होता है जिसपे हमने पहले अब हमने अगर किसी पे कुछ वर्क कर भी दिया है, उसमें बहुत सारा हमने चेंजेस कर भी दिए, बट उसका जो रॉ डेटा है उसे उसको हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए. कन्वर्टिंग जॉन स्मिथ टू स्मिथ जॉन इज एन एग्जांपल ऑफ केस फोल्डिंग स्लैश नॉर्मलाइजेशन. Outlier detection is often used as डेटा वैलिडेशन और क्वालिटी चेक की. आउटलायर्स डिटेक्शन से पता चलता है कि डेटा की क्वालिटी कैसी है और वैलिडेशन कैसा है. फंक्शंस लाइक यूनिकोड हेल्प रिमूव इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर ड्यूरिंग द कैरेक्टर रिपेयर. जो यूनिकोड फंक्शन होता है वो क्या हेल्प करता है हमें इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर्स को रिपेयर करने के लिए, कैरेक्टर को रिपेयर करने के लिए. सेक्शन बी हमारा मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है. ट्रांसफॉर्मिंग रॉ वेरिएबल्स इनटू मोर इंफॉर्मेटिव वन इज कॉल्ड एज फीचर इंजीनियरिंग. Predicting a numeric value such as salary is an example of regression. A model that fits training data perfectly but fails on new data suffers from overfitting. Dropout and weight penalties are example of regularization method. Dropout or weight penalties uh, उनका जो एग्जाम्पल होते हैं रेगुलराइजेशन के. ट्रेनिंग मल्टीपल डाइवर्स मॉडल्स टू improve accuracy is known as ensemble learning. A simple reference model for comparison is called as baseline model. Independent, unchanging data samples are described as static data. मशीन लर्निंग का सेक्शन पार्ट 2. पैरामीटर्स ट्यून बिफोर ट्रेनिंग आर कॉल्ड हाइपर पैरामीटर्स. Comparing two versions statistically to see which perform better is hypothesis testing. Normalization typically rescale numeric feature to the range 0 to 1/0 to 1. The difference between train and test transformation measures model generalization. Bias sampling in a data collection can cause selection bias. Bias sampling in data collection can cause selection bias. A model trained once and not updated further is a static model. A model that continually retrains the data is dynamic model. मतलब जो डेटा ट्रेंड मॉडल जो एक बार ट्रेंड होके छोड़ देते, अपडेटेड नहीं होते, वो स्टैटिक होते हैं, और जो कंटिन्यूअसली रिट्रेन होते रहते हैं वो होता है डायनामिक मॉडल. द लॉस फंक्शन measuring divergence between predicted and true probabilities is cross entropy loss.
डीप लर्निंग के हमारा सेक्शन आ गया, सेक्शन सी। उसका पार्ट वन है, डीप लर्निंग इज अ स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. Neural networks are universal dash function approximator of functions. On a network with more than one hidden layer is termed as deep neural network. Each layer's output becomes the next layer's input. CNNs are used for image spatial classification. RNNs handle data with strong temporal sequential dependencies. LSTM is an improved version of recurrent neural network. सेक्शन सी का डीप लर्निंग का पार्ट टू, यूजिंग अ प्री ट्रेन मॉडल फॉर अ रिलेटेड टास्क इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग. द वाइड पार्ट ऑफ वाइड एंड डीप मॉडल helps memorize or generalize specific example. The deep part captures more abstract or latent features. The linear classifiers combine input with weights and bias to form predictions. Activation function introduced non-linearity into neural models. Adding neurons or hidden layer increases model complexity or capacity. Transfer learning leverages equal is learned feature learned from a prior task. सेक्शन डी जो हमारा पाइथन डेटा स्ट्रक्चर का है उसका पार्ट वन, लिस्ट आर ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, मीनिंग दे कैन बी चेंज. टपल्स डिफर फ्रॉम लिस्ट बिकॉज दे आर immutable. Dictionary store data as key value pairs. Set contain only unique element. A DQ allows fast operation at both ends. Counter is a subclass of dictionary that tallies occurrence. A frozen set is a set that is immutable. A heap queue model implement a priority queue. In a max heap, each parent node is greater than its children. Converting a list into a heap order is called heap. So this is the end of our internal 2 solution, and thank you for watching.